Hello everyone, welcome once again. Now in this second part, we will start with energy of electrons. Okay, the total energy. Okay, so as we can see, the total energy of an orbiting electron is the sum of its kinetic energy and its electrostatic potential energy. So total energy, we can say that it is sum of kinetic energy and potential energy. En being the total energy of an electron in the nth orbit. En, energy in the nth orbit, can be written as half MeVn square, which is its kinetic energy, plus minus of Ze square upon 4 pi epsilon naught r naught. Okay, this is its potential energy. Electrostatic energy, which is in the form of potential energy. Using equation 15.3 and 15.4, okay, 15.3, 15.4, we have already derived the value of Rn, we have derived the value of Vn. Okay, so if we use these two values, okay, if we use these two values, 15.4 and 15.45, okay, so better we remember these values. Rn is n square h square epsilon naught upon pi me ze square, and Vn is ze square upon 2 epsilon naught h into n. Okay, so remember these two values, and we put these two values here, and we will get En as minus of me z square e power 4 upon 8 epsilon naught h square n square. Okay, so that derivation you can do easily because you have to just substitute it and you will get the value of En. तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर Vn और Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके En मिल जाएगा, विच इज माइनस Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड स्क्वायर इंटू ई पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए. अगेन एक बार लास्ट वापस से करते हैं. माइनस ME जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर. इसके बाद में भी याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम फिर से फॉर्मूले को रिपीट करेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे ये फॉर्मूला हमें याद होने लगेगा. द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एनर्जी. अच्छा, यहाँ पर ये इसमें क्या क्या कांस्टेंट है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर Z कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है. फिर आपका Z कांस्टेंट नहीं कहेंगे अगर हम अलग कुछ यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो Z चेंज होगा अकॉर्डिंगली. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई पावर 4 कांस्टेंट है, 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है. कांस्टेंट नहीं है तो वो है जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ओके, तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं. तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द electron indicates that the electron is bound inside the atom and it has to be given energy so as to make the total energy zero, that is to make the electron free from the nucleus. The energy increases with increase in n. ओके, तो यहाँ पर एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो हमने देखा नेगेटिव है. ओके, नेगेटिव है. अब यहाँ पर जनरली ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर आपका बढ़ता है ना तो वैल्यू कम होती है, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू कम होना मतलब वैल्यू बढ़ना है. जैसे एनर्जी -10 है और एनर्जी -8 है, तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा है? तो -8 जो है ये ज़्यादा है. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ME H एप्सिलॉन नॉट, हमको क्या मिलेगा? En, वी गेट -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The first orbit n is equals to 1 which has minimum energy is called the ground state. तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 हम पुट करें तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिलेगी. Orbits with higher value of n and therefore higher values of the energy are called excited states of the atom. Okay, तो orbits with the higher values जरा चेक करें. हाँ, the first orbit which has minimum energy is called ground state of the atom. Orbit with higher value of n and therefore higher value of energy are called excited state of the atom. If the electron is in the nth orbit, it is said to be in the nth energy state. For hydrogen atom Z1, the energy of the electron in its ground state is -13.6 electron volt. Okay, तो आपका
फर्स्ट ऑर्बिट में, ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है, उसे हम कहते हैं कि वो उसके ग्राउंड स्टेट में है। जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, जहाँ पर उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है, ओके, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो nth एनर्जी स्टेट के बराबर होगी। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इंक्रीजेज एज गिवन बाय इक्वेशन 15.8। तो जो 15.8 इक्वेशन है, ये इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम हायर स्टेट में जाने के बाद क्या एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो पता कर सकते हैं। द एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर शोन इन फिगर 15.4। द एनर्जी ऑफ द लेवल्स आर गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ये हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो है वो आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके। फिर आप फर्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं ग्राउंड स्टेट के बाद, ओके। तो n=2 जब होगा आपका तो -3.4 है, फिर -1.51 है, -0.85 है, -0.54 है, एंड सो ऑन। ये इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। द एनर्जी लेवल कम क्लोजर एंड क्लोजर एज n increases, and their energy releases reaches a limiting value of 0 as n goes to infinity. The energy required to take an electron from the ground state to an excited state is called the exciting energy. तो अब जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, उसे हम कहते हैं उसकी एक्साइटेड एनर्जी, ओके, एक्साइटेड एनर्जी of the electron in that state. For hydrogen atom, the minimum excitation energy of n equal to 2 state is the difference between ground state and that n equal to 2 state. So -3.4 minus of -13.6 is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन है और हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई की, तो इट विल मूव टू द नेक्स्ट हायर स्टेट। इन ऑर्डर टू remove or take out the electron in the ground state from a hydrogen atom, that is to make it free, we have to supply 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू इट। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में है -13.6 है, तो अगर हमने -13.6 को कंपनसेट कर दिया और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हमने सप्लाई कर दी, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी वापस से क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, ऑफ द हाइड्रोजन एटम। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम टू सेट द इलेक्ट्रॉन फ्री, ओके। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी को आप डिफाइन करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज, it is the minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy required to be given to an electron in the ground state of that atom to set the electron free। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो उसकी क्या हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको वहाँ से फ्री करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी, ओके। अब बाइंडिंग एनर्जी भी इसी के है, we will call this also as a binding energy. If you form a hydrogen atom by bringing a proton and an electron from infinity and combine them, 13.6 electron volt energy will be released, okay। वापस से देखिए, if we form a hydrogen atom by bringing a proton and an electron from infinity and combine them, 13.6 electron volt energy will be released. According to the third postulate of the Bohr, when the electron makes a transition from the mth to nth orbit, the excess energy Em minus En is emitted in the form of photon. The energy of the photon, which can be written as h nu, nu being the frequency, is therefore given by। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक हायर स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन उसके लोअर स्टेट में आता है, ओके, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये एच न्यू के फॉर्म में रिलीज़ होती है, जहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये जो एनर्जी है एच न्यू, इट विल बी इक्वल टू एम ई जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर
इंटू 1/n² माइनस 1/m²। अब यहाँ पर एनर्जी का एक्सप्रेशन हम यहाँ पर, इसके पहले हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। एनर्जी ये ई एन, nth ऑर्बिट में क्या एनर्जी होगी वो हमने फाइंड आउट किया था। तो nth ऑर्बिट में क्या एनर्जी है, उसमें से mth ऑर्बिट में क्या एनर्जी होगी, अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें, ओके, अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो देगा। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एनर्जी आपकी एच न्यू के फॉर्मेट में रिलीज होगी। ओके, तो ये रेडिएशन हो गया आपका, विच कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, ये जो एच को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एच है, एच को दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं, और जो फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी को हम सी अपॉन लैम्बडा लिख सकते हैं, तो सी को भी मूव कर लेते हैं। तो 1/λ जो है 1/λ, सो दैट हमको एक एक्सप्रेशन आ जाता है, वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ जाता है, और हम कहते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू MEZ² डिवाइड बाई 8C एप्सिलॉन नॉट H³ into 1/n² minus 1/m². Here c is the velocity of light in vacuum. We define a constant called the Rydberg's constant RH as, तो यहाँ पर बहुत सारे कांस्टेंट है, ME कांस्टेंट है, e⁴ कांस्टेंट है, 8 है, c है, एप्सिलॉन नॉट है, H³ है, ये सारा कांस्टेंट हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड इसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻7 ओके पर मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे हम तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू Z² इंटू 1/n² माइनस m²। ओके, so this is called the Rydberg formula. Remember that for hydrogen Z is 1. So this formula can be written as RH into 1/n² minus m². Thus equation 15.11 correctly describes the observed spectrum of hydrogen as given by equation 15. Okay. अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल 15.3 है, डिटरमाइन द energies of the first two excited states of the electron in the hydrogen atom. What is the excitation energy of the electron in these orbits? Okay, क्या दिया है, determine the energies of the first two excited states of the electron in hydrogen atom. आपका hydrogen atom है, determine the energies of the first two excited states of the electron in hydrogen atom. तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर n की आप वैल्यू पुट कर लो, यू विल गेट En. ओके, द फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट्स n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। E2 यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया -3.4, E3 फाइंड आउट कर लिया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज द डिफरेंस बिटवीन its energy in that orbit and the energy of the electron in the ground state. Excitation energy of an electron in the nth orbit is the difference between its energy in that orbit and the energy of the electron in the ground state. Thus the excitation energy of the electron in the first two excited states are, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दो एनर्जीज मिली हैं इनका ग्राउंड स्टेट के साथ जो एनर्जी होगा उसका डिफरेंस ले लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइन्स इन द Patience series of the hydrogen atom. The wavelength of the line in the Patience series. Patience series में n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू आपकी 4, 5, 6 ये आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने m की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट की है तो आई गेट 0.0533 इंटू 10⁻7 1/λ1 की 0.0533 इंटू 10⁻7 पर मीटर। दैट मीन्स λ1 हो गया 1.876 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे ही λ2 फाइंड आउट कर लिया, λ3 फाइंड आउट कर लिया। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पर लिमिटेशंस में। बोर के मॉडल का लिमिटेशन क्या था? तो इवन द बोर्स मॉडल सीम्स टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट हैड अ फ्यू शॉर्टकमिंग्स विच आर लिस्टेड बिलो। शॉर्टकमिंग्स एक एक करके देखते हैं। पहला है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम other than hydrogen. Even for hydrogen, more accurate study of the observed spectra showed multiple components in some lines which could not be explained on the basis of this model.
ओके, तो पहला जो लिमिटेशन बोर के मॉडल का था कि एक तो हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी एटम्स हैं उनके अंदर इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम शो नहीं किया। दूसरा, हाइड्रोजन के अंदर भी जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम था दैट वाज नॉट करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द फार्मूला। सेकंड है द इंटेंसिटीज ऑफ द इमिशन लाइंस सीम टू डिफर फ्रॉम द लाइन टू लाइन एंड बोर मॉडल हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट इंटेंसिटी। अभी जो इमिशन होता है, रेडिएशन जो होता है, वहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना वो अलग अलग इंटेंसिटीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन थी। अब ये अलग अलग इंटेंसिटीज़ की क्यों हैं, फॉर दैट ऑल्सो बोर हैज़ नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। On theoretical side also the model was not entirely satisfactory as it arbitrarily assumed orbits following a particular condition to be stable. There was no theoretical basis for that assumption. ठीक है, on theoretical side also the model was not entirely satisfactory as it arbitrarily assumed orbits following a particular condition to be stable. तो यहाँ पर क्या इन्होंने एज्यूम कर लिया था कि हाँ ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऑर्बिट क्या होगा, स्टेबल होगा। बट वो जो एजम्पशन किया था उसके पीछे कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था। अ फुल क्वांटम मैकेनिकल स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। सम रीजनिंग for the third shortcoming, that is theoretical basis for the second postulate in the Bohr's atomic model, was given by D. Broglie, which we consider next. Okay, ठीक है, अभी आगे डी ब्रॉय के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। डी ब्रॉय हमने इसके पहले हम लोगों ने डी ब्रॉय कहाँ पढ़ा है, रदरफोर्ड के मॉडल के पहले। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, राइट। डी ब्रॉयज एक्सप्लेनेशन वी हैव सीन इन चैप्टर 14 that material particle also have dual nature like that of the light, and there is a wave associated with every material particle. De Broglie suggested that instead of considering the orbiting electrons inside atom as particles, so De Broglie suggested that instead of considering the orbiting electron inside atom as particle, we should view them as standing waves, similar to the case of standing waves on the string or in pipes as studied in chapter number 6. The length of the orbit of an electron has to be an integral multiple of its wavelength. Thus, the length of the first orbit will be equal to 1 de Broglie wavelength lambda 1 of the electron in that orbit. That is the second orbit. That of the second orbit will be twice the de Broglie wavelength. So yes, this is quite good explanation. तो यहाँ पर जैसे ऑर्बिट्स के लिए यहाँ पर नाइल बोर का जो पॉस्टुलेट था, सेकंड पॉस्टुलेट था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऐसे ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेकिन वो क्यों ऐसा एजम्पशन लिया, उसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था। तो यहाँ पर डी ब्रॉय जिन्होंने ये कहा था कि जो मटेरियल है हर मटेरियल से एसोसिएटेड उसका एक वेव नेचर भी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे देखो ना कि इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि वो रिवॉल्व कर रही है तो उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा आप ऐसा कंसिडर करो कि वो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, वो एक स्टेशनरी वेव फॉर्म कर रहा है और आपका इलेक्ट्रॉन कम से कम एक वेव तो फॉर्म करेगा ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो टोटल लेंथ होगा 2πr होगा, दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स आपका वेवलेंथ होगा, n टाइम्स वेवलेंथ होगा, एंड देयरफॉर वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 2πr/n, 2πr/n ये आपका वेवलेंथ हो गया। De Broglie wavelength is related to the linear momentum p of the particle by, और वेवलेंथ का रिलेशन हमने देखा था कि वेवलेंथ क्या होता है, h/p होता है मोमेंटम, दैट इज h/vn। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 15.12, अब यहाँ पर लैम्बडा की जगह अगर हम h/mvn पुट करते हैं या फिर h/p पुट करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है कि आपका जो pn है मोमेंटम, ओके, वो होगा hn/2πrn। Thus the angular momentum of the electron in nth orbit
ln कैन बी रिटन एज, अब एंगुलर मोमेंटम हम rn से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो rn से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा nh/2 पाई। ओके, वेरी गुड। कितना एकदम फर्स्ट क्लास एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने, डी ब्रॉय जी ने। तो ln इज इक्वल टू n इंटू h/2 पाई, विच इज द सेकेंड postulate of the Bohr's atomic model. Therefore, considering electrons as the wave gives some theoretical basis for the second postulate made by Bohr. Okay, now we will turn to atomic nucleus. Atomic nucleus. Atomic nucleus 15.7.1. Constituents of the nucleus. अभी atomic nucleus की बात कर लेते हैं. Center nucleus. Constituents of the nucleus. So the atomic nucleus is made up of subatomic, meaning smaller than an atom. The atomic nucleus is made up of subatomic, meaning smaller than an atom, particles called proton and neutron. Together, proton and neutron are referred to as nucleons. Mass of a proton is about 1836 times that of the electron. Mass of a neutron is nearly same as that of the proton, but is slightly higher. Mass of the neutron is nearly same as that of the proton and slightly higher than this. The proton is a positively charged particle. The magnitude of its charge is equal to the magnitude of the charge of electron. The neutron, as the name suggests, is electrically neutral. The numbers of proton in an atom is called atomic number and is designated by Z. The number of electrons in an atom is also equal to Z. Thus, the total positive and total negative charge in an atom are equal in magnitude, and the atom as a whole is electrically neutral. The number of neutrons in the nucleus is written as n. The total number of nucleons is in a nucleus is called the mass number of the atom, and it is designated as A is equals to Z plus n. The mass number determines the mass of a nucleus and that of the atom. The atoms of an element X are represented by symbol for the element and its atomic mass number as X. We will write X, and atomic mass we will write at top as A, and atomic number we will write at the bottom as Z. You can see here. So for example, symbol of hydrogen, carbon and oxygen atoms are written as, for hydrogen we will write like this, for carbon, for oxygen. The chemical properties of an atom are decided by the number of electrons present in it, that is by Z. So number of electron you can find by this atomic. Okay, so ये जो सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं. Okay, बट यहाँ पर क्योंकि हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई को बेस से कंसिडर कर रहे हैं तो सारी चीज़ें वापस से रिपीट की गई हैं. The number of protons and electrons in the atom of a given element are fixed. For example, hydrogen atom has 1 proton and 1 electron. Carbon atom has 6 proton and 6 electron. The number of neutrons in the atom of a given element can vary. तो आपके जो प्रोटॉन नंबर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं वो सेम होते हैं और न्यूट्रॉन नंबर आपके वेरी करते हैं. फॉर एग्जांपल, द हाइड्रोजन न्यूक्लियस कैन हैव 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन. These variants of hydrogen are referred as, हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन कहते हैं, इसे कहते हैं ड्यूट्रियम और इसे कहते हैं ट्रिटियम. ओके, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप्स. तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए. Thus the deuterium and tritium are the isotopes of the hydrogen. They have the same chemical property as those of the hydrogen. Similar, helium nucleus can have 1 or 2 neutron and are referred as helium with here helium with 1 neutron and helium with 2 neutron. The atoms having the same mass number A are called isobars. तो यहाँ पर अब सेम मास नंबर, तो जैसे हम यहाँ पर ये हाइड्रोजन देख रहे हैं मास नंबर 3 है और ये हीलियम देख रहे हैं मास नंबर 3 है, तो ये दोनों आइसोबार्स कहलाएंगे, आर आइसोबार्स. एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एटॉमिक नंबर Z आर कॉल्ड आइसोटोप्स. तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं? 2 न्यूट्रॉन हैं. और ये हीलियम है, हीलियम में कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन है. तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे. तो आइसोटोप्स मतलब आपका जो एटॉमिक मास है वो चेंज होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा. आइसोबार्स
आइसोबार्स, यहाँ पर आपका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है, और आइसोटोन्स, यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है, न्यूट्रॉन नंबर है, वो सेम होगा। तो एक तो अगर मास सेम है तो आइसोबार्स, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप्स, और अगर न्यूट्रॉन नंबर सेम है तो आइसोटोन्स। ओके, यूनिट फॉर मेजरिंग द masses ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यूनिट्स फॉर मेजरिंग masses ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, अब हम ये इनको मेजर कैसे करें? तो masses of atoms and subatomic particles are measured in 3 different units. First unit is the usual unit, kilogram. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम किलोग्राम में तो मेजर कर ही सकते हैं, जो ऐसा यूनिट है, तो किलोग्राम में मेजर करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली आर, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो है इट इज़ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है इट इज़ 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो आप देखिए यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम है ना। अगर हम आगे जाएँ तो ये 1.672623 और ये 1.674927। ओके, तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन। Obviously, kilogram is not a convenient unit to measure masses of atoms or subatomic particles which are extremely small compared to 1 kg. Obviously, kg is not a convenient unit to measure the masses of atoms or subatomic particles which are extremely small compared to 1 kg. Therefore, another unit called the unified atomic mass unit is used for the purpose. ठीक है, तो क्योंकि केजी में आप देख रहे हैं -27 kg, तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए हम एक अलग यूनिट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसे यूज़ करते हैं। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट दैट इज़ 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए न्यूट्रल कार्बन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 12। 1U इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ अ न्यूट्रल कार्बन एटम। ओके, एक कार्बन एटम, न्यूट्रल कार्बन एटम के 1/12 मास को हम 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। सो यहाँ पर इसके बेसिस पर जो कार्बन का मास होगा ना वो 12 हो जाएगा इन इट्स लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो 1U अगर इसे हम किलोग्राम में देखें तो इट इज़ इक्वल टू 1.66055402 इन 10 पावर माइनस 27 kg। इन दिस यूनिट द masses of the above 3 particles are, तो यहाँ पर अगर हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के रिस्पेक्ट में मासेस को डिस्कस करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट विल बी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 0.00055 यूनिट, मास ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.007825 यूनिट, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 यूनिट। The third unit for measuring masses of atoms and subatomic particles is in terms of the amount of energy that their masses are equivalent to. तो क्या दिया है? The third unit of measuring the masses of atomic and subatomic particles is in terms of the amount of energy that their masses are equivalent to. ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके तो हो गए कि एक हमने किलोग्राम में मेजर कर लिया, दूसरा हमने सब एटॉमिक, यहाँ पर सब यूनिफाइड एटॉमिक मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब तीसरा जो तरीका है वो है कि इसे हम एनर्जी के फॉर्मेट में करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स फेमस मास एनर्जी रिलेशन, अ पार्टिकल हैविंग मास m is equivalent to the amount of energy E is equals to mc square. The unit used to measure masses in terms of their energy equivalent is ev upon c square. ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी का रिलेशन हो गया, एनर्जी E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। द यूनिट यूज टू मेजर मासेस इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी इक्विवेलेंट इज, तो मास को मेजर करने के लिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जो एनर्जी आपको मिली दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दैट एनर्जी डिवाइड बाई c स्क्वायर। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, तो एक एटॉमिक मास यूनिट का अगर हम यहाँ पर एनर्जी देखें तो इट इज़ इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई c स्क्वायर। द मास ऑफ द 3 पार्टिकल्स इन दिस यूनिट, तो इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो इट विल बी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई c स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन देखें तो इट विल बी 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर,
एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो ये 939.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर है। ओके तो ये तो हो गया आपका मासेस, जो एटॉमिक मासेस हैं उनको मेजर करने के 3 यूनिट। अब साइज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मास भी देख लिया हमने, साइज ऑफ न्यूक्लियाई। द साइज ऑफ एटम इज डिसाइडेड बाय साइज ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, हायर आर द ऑर्बिट्स ऑक्यूपाइड बाय देम एंड लार्जर इज द साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो यहाँ पर एटम की साइज हम कैसे मेजर करेंगे, तो हम और एटम की साइज उनके ऑर्बिट्स की रेडियस के बेसिस पर मेजर करेंगे, ऑर्बिट की साइज पे मेजर करेंगे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा ऑर्बिट्स होंगे उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, और उतना ही बड़ा एटम का साइज होगा। Similarly, all the nuclei do not have the same size. Obviously, the size of a nuclei depend on the number of nucleon present in it, on an atomic number, that is, on its atomic number A. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज, जैसे हमने एटम का साइज देखा कि एटम का साइज अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, मतलब इट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन नंबर। इसी तरह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज भी वेरी करता है, और ये डिपेंड करता है आपका एटॉमिक मास पर। फ्रॉम experimental observations, it has been found that the radius rx of the nucleus x is related to a as, तो यहाँ पर rx of a nucleus x, okay, फॉर्मूला है rx is r0 a power 1/3, rx is r0 a power 1/3, where r0 is, तो r0 और r0 की वैल्यू है 1.2 into 10 power -15 मीटर। ओके, द डेंसिटी रो inside the nucleus is given by, अब डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मास कंपेयर कर रहे हैं, तो 4/3 पाई आर एक्स क्यूब इंटू रो विल बी इक्वल टू m इंटू ए, फिर वी हैव एज्यूम्ड m टू बी द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन, तो mass of one nucleon multiplied by A, so give you total mass. Mass of one nucleon is m, A is atomic mass, so m into A will be total mass. So total mass will be equal to 4/3 pi r cube into rho. Okay, where m is the average mass of the nucleon, proton and neutron, as the difference in their masses is rather small. The density is then given by, तो density का formula हो जाएगा, density is equals to mass upon volume, so it is 3ma divided by 4 pi rx cube. Substituting for rx from equation 15.13, we get rho is equals to 3m divided by 4 pi r0 cube is equals to constant. Thus the density of the nucleon does not depend. So यहाँ पर density हमने कैलकुलेट की, और डेंसिटी यहाँ पर हमको मिल रही है कि 3m अपॉन 4 पाई r नॉट क्यूब। तो डेंसिटी आपका एटॉमिक मास पर तो डिपेंड करते नहीं है। दस द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियन डज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट m, pi and rho, the value of the density is obtained as 2.3 into 10 power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज़ एक्सट्रीमली लार्ज। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डेंसिटी 2.3 into 10 power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो बहुत ज़्यादा है। Among all the known element, osmium is known to have the highest density, which is 2.2 into 10 power 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या बात कर ली इन्होंने, among all the element known, osmium is known to have highest density। अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट की, तो एलिमेंट्स में ऑस्मियम एलिमेंट जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 2.2 into 10 power 4। अब इसके कंपेरिजन में न्यूक्लियस की डेंसिटी देखेंगे तो ये तो कहीं ज़्यादा है। This is smaller than the nuclear density by 13 order of magnitude. Okay, 13 order of magnitude. अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ GE70 न्यूक्लियस गिविंग इट्स मास टू बी अप्रॉक्सीमेटली 69.924 यूनिट। ओके, तो यहाँ पर पहले रेडियस के लिए फॉर्मूला है RX इज R0 इंटू ए पावर 1/3, ए की वैल्यू दे दी 69.924 एंड R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 पावर -15 मीटर है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, RX मिल गया, तो RG फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद में डेंसिटी इज 3m, जहाँ पे m की वैल्यू भी यहाँ पर कांस्टेंट है, डिवाइड बाई 4 पाई, तो मास अपॉन वॉल्यूम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एंड मास अपॉन वॉल्यूम
विल गिव मी डेंसिटी। वॉल्यूम यहाँ पर क्योंकि रेडियस मिल गया तो वॉल्यूम भी मिल जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, वी हैव लर्नड अबाउट द 4 फंडामेंटल फोर्सेस दैट occur in nature. Out of these 4 forces that determines the structure of the nucleus, uh, is a strong force, also called nuclear force. So here एक फोर्स, ये जो 4 फोर्स है फंडामेंटल फोर्स, इसमें एक फोर्स जो न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन है, ओके, उसको डिटरमाइन करता है। Fine. So nuclear forces, we have learned about the 4 fundamental forces that occurs in the nature. Out of these 4 forces, these four, the force that determines the structure of nucleus is the strong force, also called the nuclear force. This act between protons and neutrons and is mostly attractive. It is different from the electrostatic and gravitational force in terms of its strength and range. That is, अच्छा एक बार फिर पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, वी हैव लर्न अबाउट द 4 फंडामेंटल फोर्सेस दैट ऑकर इन नेचर। आउट ऑफ दीज 4 फोर्सेस दैट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। दिस एक्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होता है। एंड इज मोस्टली अट्रैक्टिव। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेंज। That is the distance up to which it is effective. Over short distances of about a few femtometer, the strength of nuclear force is much higher than that of the other 2 forces. Its range is very small and its strength goes to 0 when the 2 nucleons are at a distance larger than few femtometer. This is in contrast to the range of electrostatic and gravitational force which are infinite. तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑफ अबाउट अ फ्यू फेम्टोमीटर द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज मच हायर देन दैट ऑफ द अदर 2 फोर्सेस। और यहाँ पर इसका जो स्ट्रेंथ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो रेंज स्मॉल है और स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है। ओके, और ये जो फोर्स है इट गोज टू 0 व्हेन 2 न्यूक्लियॉन्स आर एट अ डिस्टेंस लार्जर देन फ्यू फेम्टोमीटर। द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिपल one another due to their smaller charge. The nuclear force between the nucleon counter the force of electrostatic repulsion. The proton in the nucleus repel one another due to their similar charges. अब यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सेम चार्जेस होने की वजह से रिपल करते हैं। The nuclear force between the nucleons counter the force ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब जो ये न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या करता है, ये इनके बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है इसको काउंटर बैलेंस करता है। एज द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इन अ टिपिकल न्यूक्लियस, इट ओवरकम्स द रिपल्सिव फोर्स एंड कीप्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर मेकिंग द न्यूक्लियस स्टेबल। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इसी वजह से ये जो प्रोटॉन्स हैं उनको एक साथ न्यूक्लियस के अंदर रख पाता है। द न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉट येट वेल अंडरस्टूड। व्हाट वी नो अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़ कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉट येट वेल अंडरस्टूड। इसे हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर समराइज कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर है कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग द सबएटॉमिक पार्टिकल एंड इट्स स्ट्रेंथ इज 50 to 60 टाइम लार्जर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 50 to 60 टाइम्स ज़्यादा होता है। अनलाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट ओवर द लार्ज डिस्टेंसेज, द न्यूक्लियर फोर्स हैज़ अ रेंज ऑफ अबाउट फ्यू फेम्टोमीटर एंड द फोर्स इज नेग्लिजिबल when the two nucleons are separated by larger distances. The nuclear force is independent of the charge of the nucleon. अब ये जो nuclear force है ये charge independent होता है। The nuclear force between two neutrons with the given separation is the same as between the two proton
और बिटवीन अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एट द सेम सेपरेशन। तो यहाँ पर दो प्रोटॉन के बीच हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच हो या दो न्यूट्रॉन के बीच हो, जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो सेम होगा, इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था कि अनलाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, ओके, न्यूक्लियर फोर्स हैज ए रेंज ऑफ अबाउट फ्यू फेम्टोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट का ब्रेक लूँगा और फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे।
ओके, सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक। ये इसके ऊपर हमने, हाँ ये पढ़ लिया हमने। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है nuclear binding energy. We have seen that in hydrogen atom, the energy with which the electron in its ground state is bound to the nucleus is 13.6 electron volt. This is the amount of energy which is released when the proton and an electron are brought from infinity. ठीक है, वापस से पढ़ते हैं. We have seen that in an hydrogen atom, the energy with which the electron is in its ground state is bound to the nucleus, which is a single proton. In this case is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो एनर्जी है, अगर आप इन्फिनिटी से कोई एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेके आते हो किसी एक जगह पर और बाइंड कर देते हो एक दूसरे से, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको स्पेंड करनी होती है. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर brought from an infinity to form an atom in its ground state. Okay, in other words, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये निगेटिव है ना, तो इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. अगर आप इन्फिनिटी से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को लेके आते हो, ओके, और बाइंड कर देते हो, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आपकी रिलीज होगी. So we have to supply, has to be supplied to the atom to separate the electron and the proton. तो यहाँ पर हमें ये एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं. That is to make them free. The proton and the neutron inside the nucleus are also bound to one another. Energy has to be supplied to the nucleus to make the nucleons free, that is to separate them and take them to large distance from one another. तो इसी तरह से अगर हम न्यूक्लियंस को चाहते हैं कि वो एक दूसरे से फ्री हो जाएं, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियंस हैं दे आर ऑल्सो बाइंड टुगेदर विथ सम एनर्जी. दिस एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. Same amount of energy is released if we bring individual nucleons फ्रॉम द इन्फिनिटी टू फॉर्म द न्यूक्लियस. तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी दे सकते हैं कि हमें न्यूक्लियंस को एक जगह पर लाने के लिए इन्फिनिटी से लेके आकर अगर हम इससे बाइंड करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी अगर हम उनको सप्लाई करते हैं तो क्या होंगे, न्यूक्लियंस अलग हो जाएंगे. तो वेयर डज दिस रिलीज एनर्जी कम फ्रॉम? इट कम फ्रॉम द मासेस ऑफ द न्यूक्लियंस. तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये क्यों रिलीज़ हो रही है? क्योंकि जब हम उनको बाइंड करते हैं तो उनके मासेस में जो डिस्ट्रक्शन होता है, बिकॉज ऑफ दैट दिस एनर्जी इज क्रिएटिंग. दिस मास ऑफ द न्यूक्लियस, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द टोटल मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स. दैट द मास ऑफ, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनका सेपरेटली मास ऐड करें तो आप देखेंगे कि वो मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है न्यूक्लियॉन के मास से. तो ये जो मास में जो कमी आई है ये एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो एनर्जी फिर आपकी बाहर भी रिलीज होती है. तो यहाँ पर the mass of the nucleus is smaller than the total mass of the constituent nucleons. Let the mass of the nucleus having atomic number z and the mass number a be m. तो न्यूक्लियस का मास हम कंसिडर कर लेते हैं m. It's smaller than the sum of the masses of the proton and neutron. ओके, तो यहाँ पर ये जो चेंज इन मास है डेल्टा एम होगा आपका z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. एम पी मास ऑफ एक प्रोटॉन है उसको कितने प्रोटॉन है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एम एन मास ऑफ एक न्यूट्रॉन है उसको कितने न्यूट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो टोटल तुम्हारा न्यूक्लियस का मास है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एम चेंज इन दैट मास. ये जो चेंज इन मास है इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस. द बाइंडिंग एनर्जी ई बी ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी वी विल गिव बाय द फॉर्मूला ई बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. राइट, तो डेल्टा एम की जगह पर हम जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम लिख सकते हैं, तो इंटू सी स्क्वायर. ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 15.15 वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ z electrons which will enable us to use the atomic mass in the calculation of binding energy. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ई बी, ओके, इसमें हम जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया और यहाँ पर ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे क्या मिल गया हमें, z इंटू ये एम एच, जेड इंटू एम एच
mass of hydrogen plus n into mass of n mn minus के m प्लस जेड एम ई, ये जो है ये आपका टोटल एटॉमिक मास हो गया. तो एटॉमिक मास इंटू सी स्क्वायर. So here mh is the mass of hydrogen atom and az is the atomic mass of the element being considered. We will be using atomic mass in what follows unless otherwise specified. We will be using atomic masses. An important quantity in this regard is the binding energy per nucleon. तो यहाँ पर एक important quantity क्या हो गई, ये जो total energy है अगर इसे मैं number of nucleon से divide कर देता हूँ तो per nucleon जो binding energy है that is an important energy of the nucleus. This can be considered to be the average energy which has to be supplied to a nucleon to remove it from the nucleus and make it free. तो ये E/B/A ये जो एनर्जी है ये इतनी एनर्जी हमको सप्लाई करनी होगी अगर हम एक न्यूक्लियन को रिमूव करना चाहते हैं एंड उसको फ्री करना चाहते हैं. दिस क्वांटिटी thus allows us to compare the relative strength with which the nucleons are bound in a nucleus for different species and therefore compare their stabilities. Nuclei with higher value of Eb/A are more stable as compared to the nuclei having the smaller values of the quantity. तो अगर न्यूक्लियन एनर्जी मीन्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये वैल्यू ज़्यादा होती है तो एटम आपके स्टेबल होते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए. लेकिन ये वैल्यू अगर कम है तो देन विथ स्मॉलर वैल्यू यू कैन रिमूव द न्यूक्लियन एंड एटम आपका जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा. Okay, so binding energy per nucleon for different values of A are plotted in figure 15.6. तो यहाँ पर ये हम डायग्राम देख सकते हैं जिसमें बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर इन्होंने शो की हुई है. इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी, राइट है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर. ड्यूट्रियम न्यूक्लियस, अच्छा यहाँ पर ये आप देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम है, पर न्यूक्लियन कम है, कुछ एक रेंज में ज़्यादा है, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाती है. ड्यूट्रियम न्यूक्लियस हैज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ Eb/A एंड इज देयरफॉर द लीस्ट स्टेबल. तो यहाँ पर ड्यूट्रियम देखिए अब एकदम नीचे है, ड्यूट्रियम 2 से भी कम है, काफ़ी कम है. तो ड्यूट्रियम न्यूक्लियस हैज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ Eb/A एंड इज देयरफॉर द लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियस. The values of Eb/A increases with increase in the atomic number and reaches a plateau for A between 50 and 80. तो 50 to 80 के बीच में जो आपके एलिमेंट होंगे वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी आपको एक काफ़ी ज़्यादा मिलेगी. Thus the nuclei of these elements are the most stable among all the species. The peak occurs around A is equals to 56 corresponding to iron. तो यहाँ पर 56 पर आपका हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मिलती है जो आयरन के लिए है, विच इज़ दस वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर. द वैल्यू ऑफ Eb/A डिक्रीजेज ग्रेजुअली फॉर द वैल्यू ऑफ A ग्रेटर देन 80. अब 80 से आगे जाएंगे तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी ओके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है कम होती जाती है, मेकिंग द न्यूक्लियर ऑफ दिस एलिमेंट स्लाइटली लेस स्टेबल. नोट दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैविंग अ सिंगल प्रोटॉन इज 0. ओके, बाइंडिंग एनर्जी of hydrogen nucleus having a single proton is 0. Note that the binding energy of hydrogen nucleus having a single proton. तो यहाँ पर क्योंकि कोई एक से ज़्यादा प्रोटॉन है नहीं तो आप सेपरेट किससे करोगे, तो यहाँ पर आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 0 है. कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम ऑफ मास ऑफ लिथियम द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम एटम्स आर गिवन लाइक दिस. सो आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और आपने फाइंड आउट कर लिया. ओके, 3mh + 4mn माइनस मास ऑफ लिथियम. तो आपका 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन ले लिया हमने और 4 यहाँ पर न्यूट्रॉन है तो 4 इंटू mn ले लिया और मास ऑफ लिथियम ले लिया. ओके, नाउ अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिके. मेनी ऑफ द न्यूक्लियाई आर स्टेबल. अच्छा, रेडियो एक्टिव डिके करें हम, उसके पहले मैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक लूँगा एंड देन वी विल कम एंड डू दिस रेडियो एक्टिव डिके.
ओके, तो यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिव डिके. Many of the nuclei are stable, that is, they can remain unchanged for a very long time. These have a particular ratio of the mass number and the atomic number. Other nuclei occurring in nature are not so stable and undergo changes in their structure by emission of some particles. They change or decay to other nuclei with different A and Z in the process. The decaying nuclei is called the parent nuclei, while the nucleus produced after the decay is called daughter nuclei. Okay, the decaying nuclei is called parent nuclei, while the nucleus produced after the decay is called daughter nuclei. ठीक है, the process is called radioactive decay or the radioactivity and was discovered by Becquerel in 1876. Radioactive decay occurs because the parent nuclei are unstable and get converted to the more stable daughter nuclei by the emission of some particles. These decays are of three types as described below. ओके, तो डिके यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, मतलब आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं है और वहाँ से कुछ पार्टिकल्स का एमिशन होता है. तो डिके तीन तरह के होते हैं. पहला है अल्फा डिके. इन दिस टाइप ऑफ डिके द पैरेंट न्यूक्लियस emit an alpha particle which is the nucleus of helium atom. The parent nucleus thus loses two proton and two neutron. The decay can be expressed as, तो आपका जो एटम है उसमें से आपका क्या होगा, आपका 4 एटॉमिक मास का लॉस होगा और 2 एटॉमिक नंबर का लॉस होगा. ओके, X is the parent nucleus and Y is the daughter nucleus. All the nuclei with A greater than 210 undergo alpha decay. तो जितने भी न्यूक्लियस हैं जिनका एटॉमिक मास 210 से ज़्यादा होता है वो सब अल्फा डिके शो करते हैं. The reason is that these nuclei have a large number of protons. The electrostatic repulsion between them is very large and the attractive nuclear force between the nucleons are not able to cope with it. This makes the nucleus unstable and it tried to reduce the number of protons by ejecting them in the form of alpha particles. An example of this is the alpha decay of bismuth, which is the parent nucleus with A is equals to 212 and Z is equals to 83. An example of this is the alpha decay of bismuth, which is the parent nucleus with A 212 and Z 83. Okay, the daughter nucleus has A208 and Z is equals to 81, which is थैलियम. द रिएक्शन इज, तो बिस्मथ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है थैलियम में, प्लस अल्फा यहाँ पर रिलीज होता है, प्लस अल्फा. ओके, प्लस अल्फा. द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन पार्टिकल डिके इज ऑलवेज लेस देन the mass of the parent atom. The total mass of the product of the alpha decay is always less than the mass of the parent atom. The excess mass appear as a kinetic energy. यहाँ पर क्या दिया, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा डिके इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द पेरेंट एटम. तो यहाँ पर अल्फा और ये जो थैलियम है इनका टोटल मास करेंगे तो इट विल बी लेस देन बिस्मथ मास. और ये जो डिफरेंस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. द डिफरेंस इन द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ पेरेंट एटम एंड दैट ऑफ द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू और क्यू डिके एंड इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. वी कैन राइट क्यू जो है वो mx माइनस एम वाई माइनस एम हीलियम इंटू सी स्क्वायर है. ओके, ठीक है, यहाँ तक कहानी सही है. ठीक है, mx and my, mx, my and mhe being the masses of the parent atom, the daughter atom and the helium atom. Note that we have used atomic masses to calculate Q factor. Becquerel discovered the radioactive decay by chance. He was studying the X-ray emitted by the naturally occurring materials when exposed to sunlight. He kept a photographic plate covered in a black paper separated from the materials by a silver foil. When a plate was developed, he found images of the material on them, showing that the X-ray could penetrate the black paper and silver foil. Once while studying uranium potassium phosphate in a similar way, the sun was behind the cloud, so no exposure to sunlight was possible.
And in spite of this, he went ahead and developed the plates and found images to have formed. We further experimented, he concluded, with the further experimentation, he concluded that some rays were emitted by uranium itself, for which no exposure to sunlight was necessary. He then proposed the ray through magnetic field. He then passed the ray through the magnetic field and found that the ray was affected by the magnetic field. He concluded that the ray must be charged particle and hence were different from that of the X-rays. The term radioactive was coined by the Marie Curie, who made further studies and later discovered element radium along with her husband. The Nobel Prize for the year 1903 was awarded jointly to Dr. Marie Curie and the Pierre Curie for their contribution to radioactivity. Okay. Next is beta decay. Alpha decay, in that alpha particle is emitting. Now beta decay, in this type of decay, the nucleus emits an electron. The nucleus emits an electron produced by converting a neutron into in the nucleus into a proton. Thus, the basic process which takes place inside the parent nucleus is your neutron is converted into proton and one electron is released plus anti-neutrino. Neutrino and anti-neutrino are the particles which have very little mass and no charge. During the beta decay, the number of nucleons, that is the mass number of the nucleus, remain unchanged. During the beta decay, the number of nucleon, that is the mass number of the nucleus, remains unchanged. The daughter nucleus has one less neutron and one extra proton. So during beta decay, what happened? During beta decay, the number of nucleon, that is the mass number of the nucleus, remain unchanged. Mass number does not change. The daughter nucleus has one less neutron and one extra proton. Thus, Z increases by 1 and N decreases by 1. The remaining constant to A remains constant. The decay can be written as AX Z will become AY Z plus 1 electron plus anti-neutrino. An example is that cobalt is converted into nickel. Okay. There is another type of beta decay called the beta plus decay, in which the proton get converted into neutron by emitting a positron and a neutrino. A positron is a particle with the same properties as that of the electron, except that its charge is positive. It is known as the antiparticle of electron. This decay can be written as P proton converted to neutron plus positron E plus neutrino, anti-neutrino neutrino. The mass number remain unchanged during the decay, but Z decreases by 1 and N increases by 1. The decay can be written as X, okay, converted into, so here atomic mass आपका same रहता है, but Z एक कम हो जाता है, plus you get positron plus neutrino. An example is that sodium is converted to nickel, neon plus E plus neutrino. An interesting thing about the beta plus decay is that the mass of neutron is higher than the mass of proton. Neutron is higher than the mass of proton. Thus, the decay described by equation number 15.21 cannot take place for a free proton. However, it can take place when a proton is inside the nucleus, as the extra energy needed to produce the neutron can be obtained from the rest of the nucleus. तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होने की वजह से प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ से मिल जाती है? न्यूक्लियस से ही मिल जाती है। In the beta decay, also the total mass of the product of the decay is less than mass of the parent atom. So the excess mass is converted into kinetic energy of the product. So thus in Q is the value of the decay, can be written as Q is mx minus my minus me into c square. Here we have ignored the mass of the neutrino as it is negligible compared to the masses of the nuclei. Okay. Then कुछ यहाँ पर problem भी है. Then we have a gamma decay. In this type of decay,
gamma rays are emitted by the parent nucleus. As you know, gamma rays is a high energy proton. Okay, gamma is what? Gamma is high energy proton. The daughter, known as high energy proton, the daughter nucleus is same as the parent nucleus, as no other particle is emitted, but it has less energy as some energy goes out it in the form of emitted gamma rays. We have seen that the electron in we have seen that the electron in atom are arranged in different energy levels. We have seen that the electrons in an atom are arranged in different energy levels, orbits, and an electron from a higher orbit can make a transition to a lower orbit, emitting a photon in the process. The situation in a nucleus is similar. The nucleons occupy energy levels with different energies. A nucleon can make a transition from a higher energy level to a lower energy level, emitting a photon in this process. The difference between the atomic and nuclear energy level is their energies and is in their energies and energy separations. Energies, तो यहाँ पर क्या दिया कि the difference between the atomic and nuclear energy levels is in their energies and energy separations. Energies and the differences in the energies of different levels in an atom are of the order of a few electron volt, while those in the case of a nucleus are of the order of few kilo electron volt to few mega electron volt. Therefore, whereas the radiation emitted by atom are in the ultraviolet or radio region, the radiation emitted by the nuclei are in the range of gamma rays. Usually, the nucleons in the nucleus are in the lowest possible energy state. Usually, the nucleons in the nucleus are in the lowest possible energy state. They cannot easily get excited as a large amount of energy in kilo electron volt or mega electron volt is required for their excitation. A nucleon, however, may end up in an excited state as a result of the parent nucleus undergoing alpha or beta decay. Thus, gamma decay usually occurs after one of these decays. For example, 57 cobalt undergoes a beta plus decay to form the daughter nuclei iron, Fe57, which is in excited state having the energy of 136 kilo electron volt. There are two ways in which it can make a transition to its ground state. One is by emitting a gamma ray of the energy 136 kilo electron volt, and the other is by emitting a gamma ray of the energy of 122 kilo electron volt and going to an intermediate state first, and then emitting a photon of the energy of 44 kilo electron volt to reach the ground state. Both these emissions have been observed experimentally. Which type of decay a nucleus will undergo depends on which of the resulting daughter nuclei is more stable. Often the daughter nuclei is also not stable and it undergoes further decay. तो जो डॉटर nuclei होती है वो भी स्टेबल नहीं होती है और फर्दर डिके होता है. A chain of decay may take place until the final daughter nuclei is stable. An example of such a series decay is that of uranium-238, which undergoes a series of alpha and beta decay a total of 14 times to finally reaching a stable daughter nuclei of 206 lead. Use your brain power. Why don't heavy nuclei decay by emitting a single proton or a single neutron? Law of radioactive decay. Materials which undergo alpha, beta or gamma decay are called radioactive materials. The nature of radioactivity is such. The nature of radioactivity is such that if we have one atom of radioactive material, we can never predict how long it will take to decay. If we have n0 number of radioactive atoms, parent atoms of the nuclei of a particular kind, say uranium, at time t0, all we can say is that their number will decrease with time as some nuclei. We cannot say which one will decay. Let us assume that at time t, number of parent nuclei which are left is nt. How many of these will decay in the interval time t and t plus dt? We can guess that the larger the value of nt,
larger will be the number of decay dn in time dt. Thus we can say that dn will be proportional to nt. Also we can guess that the larger the interval dt, larger will be the number of particles decaying in that interval. Thus we can write dn is directly proportional to nt into dt. So dn is equal to minus lambda nt dt, where lambda is a constant of proportionality called the decay constant. The negative sign indicates that the change in the number of parent nuclei dn is negative, that is nt is decreasing with time. We can integrate this equation and we will get, after integration, dn upon nt we will integrate, and so this equation we are integrating, we are taking this nt on the left side, so it is equals to minus lambda dt. Here n0 is the number of parent atom at the time t is equals to 0. So integration will give me ln of nt divided by n0 will be equal to minus lambda t, minus lambda 2. So therefore nt can be written as, it is n0 into e power minus lambda t. So this is the decay law of radioactivity. तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं विच यू कैन इजीली डू. ओके, गया पेन. ओके, दिस इज द डिके लॉ. तो ये हो गया हमारा डिके लॉ. एन टी इज n0 into e power minus lambda t. This is the decay law of radioactivity. The rate of decay, that is the number of decays per unit time, the rate of decay per unit time minus d nt upon dt is also called activity at. Can be is also called activity at. Can be written using equation number 15.24 and 15.25 as at is minus dn upon dt is lambda nt is equals to lambda nt is equals to lambda n0 into e power minus lambda t. Right. At t is equals to 0, the activity is given by a0 is equals to lambda n0. Using equation number 15.26 can be written as at is a0 into e power minus lambda t. at is a0 into e power minus lambda t. Activity is measured in the units of becquerel in SI unit. Activity is measured in unit. Activity is measured in unit of becquerel in SI unit. 1 becquerel is equal to 1 decay per second. Another unit to measure the activity is curie. 1 curie is 3.7. तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं becquerel. Another unit which we use to measure the activity is curie. 1 curie is 3.7 into 10 power 10 decays per second. Thus 1 curie is equal to 3.7 into 10 power 10 becquerel. Half-life of radioactive material. Half-life. The time taken for the nuclei, the time taken for the number of parent radioactive nuclei of the parent particular species to reduce to half its value is called the half-life. ठीक है, आपके पास में n0 रेडियोएक्टिव एटम्स हैं, वो डिके हो जाते हैं और उनका नंबर आधा हो जाता है, तो कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ. दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 15.25. हमारा जो फॉर्मूला है वो है n0 डिवाइड बाई 2. अगर ये हाफ हो जाता है, n will become n0 by 2, तो इट इज इक्वल टू n0 इंटू ई पावर माइनस लैम्बडा टी हाफ. तो यहाँ पर ये इक्वेशन को यूज़ करके टी हाफ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर n0 विल कैंसिल and we can say that e power lambda t half is equals to 2e. So therefore t is equals to, we will take log on both the sides, so t half is ln2 divided by lambda. ln2 is 0.693, so it is 0.693 divided by lambda. The interesting thing about the half life is that even though the number goes down from n0 to n0 by 2 in time t by half, after another time interval of t half, the number of parent nuclei will not go to 0, it will go to half of the value at t is equals to half. तो पहले आपके पास में अगर 100 है तो 100 का 50 होगा हाफ लाइफ में, और फिर 50 का 25 होगा अनदर हाफ लाइफ में, और 25 का 12.5 होगा अनदर हाफ लाइफ में.
So thus a time interval equal to half-life is the number of a parent nuclei reduces by a factor of half. Next है average life of the radioactive species. Average life क्या है? We have seen that different nuclei of a given radioactive species decay at different times. That is, they have different lifetimes. We can calculate the average lifetime of a nucleus of material using the equation 15.25 as described below. Okay, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि average life of a radioactive species. We have seen that different nuclei of a given radioactive species decay at different time. We have seen that different nuclei of a given radioactive species decay at different time. That is, they have different lifetime. We can calculate the average lifetime of a nucleus of a material using equation 15.25 as described below. The number of equation 15.25 कहाँ गया 15.25 15.25 ये है एंटी n0 इंटू ई पावर माइनस लैम्बडा टी. तो जो लैम्बडा की वैल्यू है ये अलग अलग के लिए अलग अलग होगी. We have seen that different nuclei of a given radioactive species decay at different time. That is, they have different lifetimes. We can calculate the average lifetime of the nucleus of the material using equation 15.25 as described below. The number of nuclei decaying between time t and t plus dt is given by lambda into n0, okay, lambda into n0 e power minus lambda t into dt. The lifetime of these nuclei is t. Thus the average lifetime tau of the nucleus is tau is 1 upon n0 into between 0 to infinity t into lambda n0 e power minus lambda t dt is equals to lambda integration of t into e power minus lambda t dt. ओके, तो ये एक्सप्रेशन से हमको ये समझ में आ जाएगा कि लाइफ टाइम क्या है पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का डिके होने के लिए. तो इंटीग्रेटिंग द अबव we get tau is 1 divided by lambda. So the relation between the average lifetime and the half lifetime can be obtained using equation as t half. Half life is what? It's tau ln2. Tau ln2 is 0.693, so 0.693 tau. 0.693 tau. Again, you have examples. So a lot of examples are given. Now, nuclear energy. You are familiar with the naturally occurring conventional sources of energy. These include the fossil fuel, that is the coal, petroleum, natural gas, and firewood. The energy generation from these fuels is though chemical reactions. It takes millions of years for these fuels to form. Naturally, the supply of these conventional sources is limited, and naturally, okay, the energy generated from these fuels is though chemical reaction. It takes millions of years for these fuels to form. Naturally, the supply of these conventional sources is limited, and with indiscriminate use, they are bound to get over in a couple of hundreds of years from now. Therefore, we have to use alternative sources of energy. The one already in use are hydroelectric power, solar energy, hydroelectric power, solar energy. Naturally, the supply of these conventional sources are limited, and with indiscriminate use, they are bound to get over in a couple of hundreds of years from now. Therefore, we have to use alternate source of energy. The one already in use are hydroelectric power, solar energy, wind energy,
एंड न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बीइंग द लार्जेस्ट सोर्स एमंग दीज। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियर अंडरगोज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज व्हेन वन न्यूक्लियस आर अ पेयर ऑफ न्यूक्लियाई ड्यू टू देयर इंटरेक्शन अंडरगोज अ चेंज in their structure resulting in new nuclei and generating energy in the process. While the energy generated in chemical reaction is of the order of few electron volt per reaction, the amount of energy released in the nuclear reaction is of the order of few mega electron volt. क्या कहा इन्होंने? While the energy generated in a chemical reaction is of the order of few electron volt. तो chemical energy जो आपकी जनरेट होती है वो few electron volt में होती है, whereas जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन्स में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दस फॉर सेम वेट of the fuel, the nuclear energy released is about a million times that released through the chemical reaction. However, the nuclear energy generation is very complex and expensive process and it can also extremely harmful. Let us learn more about it. तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है ये आपकी काफ़ी हार्मफुल भी होती है। ओके, हार्मफुल क्यों होती है? क्योंकि इसे जो रेडिएशंस निकलते हैं उससे हमारे ऊपर काफ़ी हार्म इफेक्ट होते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ हार्मफुल। ओके, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो वी हैव सीन, लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। अच्छा, ये यहाँ पर हमने देख लिया। इट वुड we have seen in section 15.8 that the mass of nucleus is smaller than the sum of mass of its constituents. The difference in the two masses is the binding energy of the nucleus. It would be the energy released in the nucleus if the nucleus is formed by bringing together its constituents from the infinity. This energy is large in mega electron volts and this process can be good source of energy. तो अगर हम न्यूक्लियस को एक साथ लेके आते हैं और उनको बाइंड कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इन प्रैक्टिस वी नेवर फॉर्म न्यूक्लियाई स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। हाउएवर वी कैन ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी बाय टू अदर processes, that is nuclear fission, in which a heavy nucleus is broken into two nuclei of the smaller masses, and nuclear fusion, in which two lighter nuclei undergo the nuclear reaction and fuse together to form a heavier nucleus. Both the fission and the fusion are nuclear reactions. Let us understand how the nuclear energy is released in the two process. तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक तो ये है कि आप जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको एक दूसरे के क्लोज लेके आ जाओ और बहुत सारे अमाउंट में आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, हम ऐसे न्यूक्लियॉन्स फ्री नहीं होते हैं कि हम उसको एक साथ लेके आ जाएं। इसके अलावा दो और तरीके हैं। एक है न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसमें हम क्या करते हैं, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं और वो एक हैवियर न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। एंड इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा तरीका है कि कोई हैवियर न्यूक्लियाई है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एंड इन दैट केस ऑल्सो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मास होती है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन वी हैव सीन इन फिगर नंबर 15.6 दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई. This quantity is a measure of stability of the nucleus. As seen from the figure, the middle weight nucleus mass number ranging from 50 to 80, जिसका मास 50 to 80 के बीच में है, हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड आर मोस्ट स्टेबल. तो ये तो स्टेबल होते हैं. वाइल द न्यूक्लियाई विद हायर एंड लोअर एटॉमिक मास हैव द स्मॉलर वैल्यूज EB अपॉन A. क्या दिया है, तो हायर एंड लोअर, लेकिन जिसके एटॉमिक मास इनके रेंज से ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं वो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं. द वैल्यू ऑफ EB अपॉन A गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल A reaches 238, which is the mass number of the heaviest naturally occurring element, which is uranium. Many of the heavy nuclei are unstable and decay into two smaller mass nuclei. तो ये जो heavier nuclei हैं ये क्या होते हैं, ये disintegrate हो जाते हैं, unstable होते हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं. लेट अस कंसिडर अ केस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस से विथ A is 230 break into two nuclei having A between 50 and 150. ओके तो एक जो 230 का है, ओके
वो क्या करता है, वो ब्रेक हो जाता है और एक 50 और दूसरा 150 के बीच में कुछ एक न्यूक्लियस बनता है। Okay, the EB/A of the product nuclei will be higher. तो अब जो नया मेरा जो प्रोडक्ट बना है उसका पर न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा होगी of the parent nuclei. This means that the combined mass of the two product nuclei will be smaller than the mass of the parent nuclei. The difference in the mass of the parent nuclei and that of the product nuclei taken together will be released in the form of energy in the process. This process in which a heavy nuclei breaks into two lighter nuclei with a release of energy is called nuclear fission and the source and is a source of nuclear energy. Okay. One of the nuclei used in the nuclear energy generated by fission is 236U92. Okay, so one of the nuclei used in the nuclear energy, एक न्यूक्लियाई जो हमने यूज़ किया वो यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द न्यूक्लियाई यूज इन द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड बाय फिजन इज यूरेनियम. दिस हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 2.3 into 10 power 7 year and an activity of 6.5 into 10 power minus 5 CI per G. However, it being fissionable, most of its nuclei have already decayed and it is not found in nature. तो क्या हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी डिके हो सकता है, नेचुरली डिके हो सकता है, तो यूरेनियम 99% यूरेनियम जो है वो ऑलरेडी डिके हो चुका है, नेचुरली डिके हो चुका है. मोर देन 99% ऑफ द यूरेनियम इज इन द फॉर्म ऑफ U23898 and less than 1% is in the form of 23592. U23892 also decays, but its half-life is about 10 power 3 times higher than that of the 236U92 and is therefore not very useful for energy generations. The species needed for nuclear energy generation, that is uranium 23692, can be obtained from naturally occurring uranium 23592 by bombarding it with a slow neutron. तो यहाँ पर 23592 को हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रॉन से बोम्बार्ड करते हैं एंड ये जो U23592 है ये न्यूट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है एंड U23692 फॉर्म कर लेता है. दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज U23592 प्लस न्यूट्रॉन गिव्स U23692. U23692 कैन अंडरगो द फ्यूजन इन सेवरल वेज. अब यहाँ पर इसका फ्यूजन होता है, सेवरल वेज में फ्यूजन होता है, producing different pairs of daughter nuclei and generating different amount of energy in the process. Some of its decay are, तो यहाँ पर ये U236 जो है वो इंडियम 137 प्लस वाई जो है जो भी है 97 प्लस 2 न्यूट्रॉन या फिर BA 140 प्लस KR 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन, इस तरह से ये डिसइंटीग्रेट होता है. ओके 23692 ये 133 SB प्लस 99 NB. Some of the daughter nuclei produced are not stable and they further decay to produce more stable nuclei. The energy produced in the fission is in the form of kinetic energy of the product, that is in the form of heat which can be collected and converted into other forms of energy as needed. Uranium nuclear reactor. Uranium nuclear reactor. The nuclear reactor is an apparatus or a nuclear reactor is an apparatus or a डिवाइस इन विच न्यूक्लियर फ्यूजन इज कैरिड आउट. तो ये रिएक्टर क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम ये रिएक्शंस को करते हैं. क्या हो गया, ओके बेटर इसको यूज़ करते हैं. क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ हो गया. तो इन कंट्रोल मैनर produces energy in the form of heat which is converted to electricity. In uranium reactor, uranium-235 is used as a fuel. It is bombarded by slow neutrons to produce U-236 which undergoes fission. So chain reactions. Neutrons are product in the fission. Neutrons are produced in the fission
reaction shown in equation 15.31, some reactions produce 2 neutrons while the other produce 3 or 4 neutrons. So कुछ में 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, कुछ में 3 या 4 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं. The average number of the neutrons per reaction can be shown to be 2.7. These neutrons are in turn absorbed by other uraniums. These neutrons are absorbed by the other uranium nuclei to produce uranium-236, which undergoes a fission and produce further 2.7 neutrons per fission. This can have a cascading effect, and the number of neutrons produced and therefore the number of uranium-236 nuclei produced can increase quickly. This is called chain reaction. Chain reactions, such reactions will lead to a fast increase in the number of fission and thereby in a rapid increase in the amount of energy produced. This will lead to an explosion in a nuclear reactor. Method are employed to stop a chain reaction from occurring, and fission and energy generation is allowed to occur in a controlled fashion. The energy generated, which is in the form of heat, is carried away and is converted to electricity by using the turbines. More than 15 countries have nuclear reactor and use nuclear power. India is one of them. More than 15 countries have nuclear reactor and nuclear power. India is one of them. There are 22 nuclear reactors in India. The largest and one being at Kudakulam, Tamil Nadu. Maximum nuclear power is generated by the USA. Nuclear fusion हो गया. Nuclear fusion, we have seen that light nuclei where A is less than 40 have lower EB by A as compared to the heavier ones. If any two of the lighter nuclei come sufficiently close within about 1 femtometer of each other, then they can undergo the nuclear reaction and form a heavier nucleus. The heavier nucleus will have higher EB by A than the reactant. The mass of the product nuclei will therefore be lower than the total mass of the reactant, and energy of the order of mega electron volt will be released in the process. This process within two nuclei, fuse together to form a heavier nucleus accompanied by a release of nuclear energy is called nuclear fusion. For a nuclear reaction to take place, it is necessary for the two nuclei to come within about 1 femtometer of each other so that they can experience the nuclear force. It is very difficult for the two atoms to come that close to each other due to electrostatic repulsion. Between the electrons of the two atoms. This problem can be solved by stripping the atoms of their electrons and producing bare nuclei. It is possible to do so by giving electrons energies larger. तो यहाँ पर ठीक है, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा. क्या दिया है कि for a nuclear reactions to take place, it is necessary for two nuclei to come to within about 1 femtometer of each other so that they can experience the nuclear forces. It is very difficult for the two atoms to come that close to each other due to the electrostatic repulsion between the electrons of the two atoms. So दो atoms को तो हम इतना close लेके आ नहीं सकते. This problem can be solved by stripping the atom of their electrons एंड प्रोड्यूसिंग बेयर न्यूक्लियाई. तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पहले हम निकाल लेते हैं, जिससे हमको सिर्फ न्यूक्लियाई मिलती है और फिर हम उसको एक दूसरे के क्लोज लाते हैं. ओके, इट इज़ पॉसिबल टू डू सो बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जीज लार्जर देन द आयोनाइजेशन एनर्जीज. तो ये कैसे हम ऑब्टेन करते हैं कि भाई उन्हें आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे सो दैट इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो जाएंगे बाय हीटिंग अ गैस ऑफ एटम्स. बट even after this the two bare nuclei find it very difficult to go near each other due to, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं. क्यों नहीं जाते हैं? ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देयर पॉजिटिव चार्जेस. फॉर न्यूक्लियर fusion to occur, we have to heat the gas to a very high temperature, thereby providing a nuclei with a very high kinetic energy. These high energies can help them to overcome the electrostatic repulsion and come close to one another. As the positive charge of a nucleus
goes on increasing with increase in the atomic number. The kinetic energy of the nuclei, that is the temperature of the gas, necessary for nuclear fusion to occur, goes on increasing with the increase in the value of Z. Increasing the value of Z. Okay. न्यूक्लियर फ्यूज़न इज टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इन द यूनिवर्स. अब यूनिवर्स में आप देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न होता ही रहता है, सन में होता रहता है. इट मोस्टली टेक प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्टार्स वेयर द टेम्परेचर आर हाई इनफ फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस टू टेक प्लेस. द लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज इनटू अ heavier nuclei, generating the energy in the process. Nuclear fusion is in fact the source of energy for stars. Most of the element heavier than boron till iron that we see around us today have been produced through the nuclear fusion inside the stars. तो ये जो हमको बोरॉन से लेकर आयरन तक की चीज़ें मिली हैं, ये सब क्या हैं? They are the result of nuclear fusion. Okay. Do you know? Okay. Light elements, that is the deuterium, helium, lithium, beryllium, and boron, have not been created inside the stars, but are believed to have been created within the first 200 seconds in the life of the universe, that is within 200 seconds of the Big Bang, which makes the beginning of the universe. The temperature at that time was very high and some nuclear reactions could take place. After about 200 seconds, the temperature decreased and nuclear reactions were no longer possible. The temperature at the center of the sun is about 10 power 7 Kelvin. The nuclear reaction taking place at the center of the sun are the fusion of 4 hydrogen nuclei, that is protons, to form a helium nucleus. Of course, because the electrostatic repulsion and the values of the densities at the center of the sun, it is extremely unlikely that the 4 proton will come sufficiently close to one another at a given time so that they can combine to form a helium. Instead, the fusion proceeds in several steps. The effective reaction can be written as 4 proton, they gives alpha particle plus 2 positron plus neutron plus 26.7 mega electron volt. These reactions have been going on inside the sun since past 4.5 billion years and are expected to continue for similar time period in the future. At the center of other stars where the temperature are higher, nuclei have then heavier than hydrogen can fuse, generating the energy. तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस एनर्जी टेम्परेचरों का हीट होगा उतना बड़े एटम्स क्या कर सकते हैं? फ्यूज हो सकते हैं. द फ्यूजन इनसाइड द स्टार्स कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर smaller than iron, that is 56. The reason for this is that iron has the highest EV by A value among all the atoms as seen from figure 15.6. If the iron nuclei fuse into another nucleus, the atomic number of the resulting nuclei will be higher than that of the iron, and hence it will have the smaller EV by A. The mass of the resultant nuclei will hence be larger than the sum of masses of the reactant, and energy will have to be supplied to the reactant for the reactions to take place. The element heavier than iron which are present in the universe are produced via other type of nuclear reactions which take place during stellar explosions. Calculate the energy. Okay, ये सब ठीक है. Numericals. The discussion of nuclear energy will not be complete without mentioning its harmful effect. If an uncontrolled chain reaction set up in a nuclear fuel, an extremely large amount of energy can be generated in a very short time. This fact has been used to produce what we call as atom bombs or nuclear devices. Either fission alone or both fission and fusion are used in these bombs. The first such device were made towards the end of the Second World War by America. By now, several countries, including India, have successfully made and tested such nuclear devices. America remains the only country to have actually used 2 atom bombs, which completely destroyed the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan in early August 1949. We have seen that the activity of radioactive material decreases exponentially with time.
Other examples of exponential decay are amplitude of a simple pendulum decay exponentially, that is a is equals to a0 e power minus bt, where b is damping factor. Cooling of an object in an open surrounding is exponential. Temperature theta is theta 0 e power minus kt, where k depends upon the object and the surrounding. Discharging of a capacitor through a pure resistor is exponential. Charge q of a capacitor at a given instance is q is equals to q0 e power minus t upon rc, where rc is called the time constant. Charging of a capacitor is also exponential, but it is called exponential growth. Okay, तो ये था चैप्टर एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर दैट वी हैव फिनिश्ड. ओके, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं दैट वी विल सी मे बी in some time future. Maybe tomorrow we can see this. Okay, so thank you for your patience and being with me. Thank you everyone.